कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले के ये दृश्य आपको बता रहे हैं राजकोट से, जहां पर प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इस एग्जीबिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आत्मनिर्भर भारत की झलक इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई जा रही है। कैसे स्वदेशी को हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पेश कर सकते हैं, वो झलक इस एग्जीबिशन के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद गणमान्य लोगों से जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 के जिस संकल्प को लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें हर राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे छोटे छोटे उद्यमों को, कैसे महिलाओं को सशक्त बनाकर हम विकसित भारत के संकल्प को साकार कर सकते हैं, उस कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रीजनल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे और उससे पहले यहाँ पर राजकोट में जो एग्जीबिशन लगाई गई है, जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और उसके बाद प्रधानमंत्री अवलोकन करते हुए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से गुजरात इस देश में अपनी भूमिका निभा रहा है, किस तरह से गुजरात राज्य अपना योगदान दे रहा है, कैसे छोटे छोटे मझोले व्यापारियों को स्थान दिया जा रहा है, मंच प्रदान किया जा रहा है, उनकी प्रतिभा को बड़ा मंच प्रदान किया जा रहा है, कैसे हम स्वदेशी की भावना को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्वदेशी उत्पादों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस एग्जीबिशन के माध्यम से वो तमाम बातों को बताया जा रहा है। तो राजकोट से ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं राजकोट। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, और इसी दौरान प्रधानमंत्री राजकोट पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यापार शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो विस्तार से जानकारी हासिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास तौर पर स्वदेशी को अपनाने का एक स्टॉल यहां पर प्रदर्शित किया गया है। और वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे और उससे पहले की ये तस्वीरें हैं राजकोट में, जहां एग्जीबिशन लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उसके बाद इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वोकल फॉर लोकल की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हर राज्य के ये जो सम्मेलन होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हर राज्य सक्षम होगा, जब हर राज्य आत्मनिर्भर होगा, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होगा, तभी हम विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार कर सकेंगे। और उसी राह में एक ये सम्मेलन महत्वपूर्ण नींव के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से गुजरात राज्य अब वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस नारे के साथ, इस संकल्प के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और जब स्वदेशी की हम बात करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर राज्य के वो छोटे और मझोले उद्यमियों को रोजगार प्रदान किया जाए, सहायता प्रदान किया जाए, ताकि वो अपने क्षेत्र में रोजगार सृजित करने वाले बने, रोजगार पाने नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। और उसी को आधार मानकर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आज ये सम्मेलन शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट पहुंचे हैं। गुजरात की उनकी
यात्रा। गुजरात दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री से जानकारियां साझा की जा रही है। इस प्रदर्शनी के संबंध में, इस प्रदर्शनी के बारे में प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है कि कैसे लोकल से ग्लोबल पहचान गुजरात राज्य बना रहा है। और आगंतुक पुस्तिका में प्रधानमंत्री अपनी बात लिखते हुए भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो गुजरात दौरे का प्रधानमंत्री का आज दूसरा दिन है और इस वक्त प्रधानमंत्री राजकोट में मौजूद हैं। यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे और उससे पहले यहाँ पर लगी हुई प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, उसके बाद प्रदर्शनी का अवलोकन भी प्रधानमंत्री ने किया और इतना ही नहीं, आगंतुक पुस्तिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात भी लिखी है। अपने मन के विचार प्रधानमंत्री ने साझा किए हैं। तो व्यापार शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कैसे देश के व्यापार को नई गति मिल रही है, ये प्रदर्शनी उसका उदाहरण है। कैसे नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं भारत में और गुजरात राज्य किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, इस दौरे का आज दूसरा दिन है। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की और उसके बाद रुख किया राजकोट का। यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करने वाले हैं और उससे पहले यहाँ पर लगी प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और उसके बाद प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी दृश्यों में आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री को जानकारी भी साझा कर रहे हैं कि अलग अलग जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वो कैसे आत्मनिर्भर भारत की झलक इन स्टॉल्स के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे गुजरात राज्य आत्मनिर्भर हो रहा है, कैसे यहाँ पर छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, सभी को मंच प्रदान किया जा रहा है। और इसी कड़ी में ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी है और उससे पहले प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। और हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन उन्होंने किया और उसका अवलोकन करते हुए भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये प्रदर्शनी किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की झलक प्रदर्शित कर रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस रीजनल कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से हैं। पहला है ट्रेड शो और एग्जीबिशन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और जो रीजनल कॉन्फ्रेंस है, थोड़ी देर बाद जब वो विशाल जन समूह से मुखातिब होंगे उसके बाद उसका इनॉग्रेशन करेंगे। अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर जो ये अवधारणा रखी गई थी रीजनल कॉन्फ्रेंस की, गुजरात पहला राज्य है जिसने गुजरात के सभी जिलों को ग्लोबल इकोसिस्टम के साथ जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की है। आपको याद होगा गुजरात वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत 10 साल पहले हुई थी और उसी की सफलता से प्रेरित होकर के रीजनल कॉन्फ्रेंसेस की शुरुआत होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को कि 1800 बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग केवल 2 दिनों में प्लान की गई है। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम नजर आता है यहाँ पर और उम्मीद ये की जा रही है कि 1500 से ज्यादा एमओयूज यहाँ पर साइन किए जाएं। 110 इंटरनेशनल बायर्स हैं। जापान यहाँ पर पार्टनर कंट्री है और आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जापान के कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात और जापान का रिश्ता बहुत पुराना है
और उसको और भी ज्यादा मजबूती शायद मिलने की उम्मीद है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री गुजरात के Prime Minister sir, we heartily welcome you. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની આ વીર ભૂમિ પર જેમના સ્વાગત માટે આજે રણ અને રત્નાકર પણ આતુર છે એવા આપણા પનોતા પુત્ર ભારતના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વાગત કરવા માટે ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને વિનંતી કરું છું કે શોલ અને સ્મૃતિ ચિહ્નથી આદરણીય મોદી સાહેબનું સ્વાગત કરશો. પંચતત્વ મેરુ શ્રી યંત્ર crafted in 3D technology in Rajkot using advanced CNC technology is being gifted to Honorable Prime Minister sir. And the second memento features prototype specimens representing Rajkot's precision manufacturing, spanning aerospace, power, medical, drone, and marine technologies. Once again, we welcome you, Honorable Prime Minister, sir. Leadership inspires, vision energizes, and purpose unites. To set the tone for this landmark gathering, we now present a motivational song, an ode to aspiration, innovation, and the spirit of New India by Geetaben Rabari. We welcome you, madam. ધામ દ્વારિકા તીર્થ શિર
अन महासागर में माछ अरे जित जित एकड़ो कछी वसे उत लग्यो प्यो आडी आडी काच आफत आवे बहु अकड़ावे तो ये सजावे कछवासी रण रे ताड़ी बहु है ताड़ी हिंगी धरा छे कछवाड़ी प्रजाजनो ना दिल ने जीत्या आपी सौगातो बहु सारी पिए मय मारा प्रभाव साड़ी नमो सदाये निमधारी नमो सदाये निमधारी नमो सदाये निमधारी। આપની વાણી અને શબ્દો દ્વારા કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર દર્શન કરાવવા બદલ ગીતાબેન આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના આ ગરિમામય અવસરે સ્વાગત પ્રવચન માટે હવે ગુજરાતના માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને આદર સહિત અમે આમંત્રિત કરીએ છીએ. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ સમિટ રાજકોટ અને કચ્છ એડિશનના ઇનોગ્યુરલ ફંક્શનમાં આપની સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, ગુજરાત જે વાપીથી તાપી તરીકે ઉદ્યોગોમાં ઓળખાતું હતું, 2003માં આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા ગુજરાતમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત લોન્ચ કરીને ગુજરાતને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની દિશામાં મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરની અંદર એક ખૂબ જ મોટું પ્રોત્સાહન અપાવ્યું. આજે ગુજરાતની ચારેય દિશાઓમાં આપને મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ તરીકેના અનેક મોટા સેક્ટર્સ પ્રાપ્ત થયા છે. 2003માં 80 MOUs જોડે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની શરૂઆત થઈ હતી, જે 98,000 પ્રોજેક્ટ્સ આજે પરિપૂર્ણ થયા છે. ખાસ કરીને આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ સમિટમાં 400 એક્ઝિબિટર્સોએ ભાગ લીધો છે. ખાસ કરીને 1500થી વધારે MOUs થવાની શક્યતા છે. રિવર્સ બાયર સેલર્સ મીટની અંદર 16 દેશોના મહાનુભાવો અહીંયા પધાર્યા છે. ખાસ કરીને આ બેઉ સેક્ટરના MSME સેક્ટરને ખૂબ મોટો ફાયદો આનાથી થઈ શકે છે. અનેકવાર અનેક લોકો પૂછે છે કે ગુજરાતમાં જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેમ કરવું જોઈએ. ગુજરાત રાજ્યમાં ખાસ કરીને મોબિલિટીની વાત હોય તો રસ્તા, રેલ નેટવર્ક, એરપોર્ટ, પોર્ટ્સ કનેક્ટિવિટી, આ બધા જ ક્ષેત્રની અંદર ગુજરાતે ખૂબ સારી રીતે વિકાસ કર્યો છે. સ્ટેબિલિટીની વાત હોય તો નીતિઓ અહીંયા ઝડપથી બદલાતી નથી. આજના સમયની જે માંગ હોય તે પ્રમાણે તમામ વેપારીઓને રાજ્ય સરકાર દ્વારા હંમેશા સહયોગ કરાય છે. સેફટીની વાત હોય તો રોકાણકારો માટે પણ અને નાગરિકો માટે બી અહીંયા સૌથી સારી સુરક્ષાઓનું પ્રાવધાન ખાસ કરીને ગુજરાતના તમામ ખૂણાઓમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે. ગેરંટીની વાત હોય તો અહીં આપેલા વચનો એ હંમેશા પૂરા થાય છે. હું આજે ખાસ કરીને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો આભાર માનવા માગું છું. મારા જેવા અનેક યુવાઓ, મારી પછીની પેઢીના બી અનેક યુવાઓ એના સપના સાકાર કરવા માટે ગુજરાતમાં જે પ્રકારે 2003થી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની યાત્રા જે ચાલુ થઈ, એ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના કારણે આજે ગુજરાતના લાખો કરોડો યુવાનોને રોજગારી બી મળી છે. અનેક લોકોના વેપારના સપના બી સાકાર થયા છે. મને આજે યાદ છે ગિફ્ટ સિટીનું સપનું, ગિફ્ટ સિટીનું વિઝન જ્યારે પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ દુનિયા સમક્ષ મૂક્યું ત્યારે અનેક સો કોલ્ડ ઇન્ટેલિજન્ટ લોકો દ્વારા ગિફ્ટ સિટીને સપનું ગણાવવામાં આવ્યું. પરંતુ એ સપનું આજે સાકાર થયું છે.
ફિનટેકની દુનિયામાં દુનિયાનું સૌથી સારા સિટી તરીકે આપણું ગિફ્ટ સિટી ઓળખાય છે. એ જ પ્રકારે ધોલેરા આજે એક સ્માર્ટ સિટી તરીકે ડેવલપ થયું છે. ત્યાં સેમિકન્ડક્ટર ફેબની વાત હોય કે અનેક નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આજે રૂપ લઈ રહી છે. સાણંદની વાત હોય, બેચરાજીની વાત હોય, આ તમામ સેક્ટર્સની અંદર ખૂબ મોટા મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ આવવાના કારણે એક મોટી ઇકોસિસ્ટમ ઊભી થઈ અને એના કારણે ગુજરાતના લાખો યુવાનોના સપના સાકાર થયા છે. હું ફરી એકવાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો આભાર માનું છું કે એમને ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ માટે જે 23 પેરામીટર્સ દેશ સમક્ષ મૂક્યા. ગુજરાત રાજ્ય સરકારે આ 23 પેરામીટર્સ ઉપર કામગીરી કરી છે અને હજી બી વધુ ઝડપથી આવનારા દિવસોમાં ચાહે સબસિડીની વાત હોય, ચાહે નવા એમઓયુઝની વાત હોય, એમઓયુઝના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનની વાત હોય, આ તમામ દિશામાં આપના દ્વારા આપવામાં આવેલા વિઝનને અમે લોકો સાકાર કરવા માટે ટીમ ગુજરાત ખૂબ સારી રીતે કામગીરી કરશે. હું ગુજરાતમાં પધારેલા સૌ ઇન્વેસ્ટર્સનું અહીં સ્વાગત કરું છું. રાજ્ય સરકાર એ તમારા માટે હંમેશા તત્પર છે. તમે નાનામાં નાની કોઈ બી તકલીફ હોય, અમે હંમેશા તમારી સાથે છે. આપ વધુમાં વધુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ગુજરાતમાં લાવો એવી આપ સૌ લોકોને હું અપીલ કરું છું. આપ સૌ લોકોનું ફરી એકવાર આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ સમિટમાં સ્વાગત કરું છું. આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર માન્ય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી. આ રિજનલ કોન્ફરન્સના મહત્વ અને કચ્છ સૌરાષ્ટ્રના વિકાસના વિઝનને અમારી સમક્ષ મૂકવા બદલ આપનો ધન્યવાદ. Ladies and gentlemen, Gujarat's growth story is written through strong partnerships between governance and enterprise. We now hear from distinguished leaders of Indian industry, visionaries who have shaped global confidence in India. Foremost, I invite Mr. Parakram Singh Ji Jadeja, Chairman and Managing Director, Jyoti CNC Automation, an eminent industrialist from Rajkot, to share his perspective. Welcome, sir. Honorable Prime Minister, Government of India, Sri Narendra Bhai Modi, Honorable Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Deputy Chief Minister, Sri Harsh Bhai Sanghvi, Honorable Ministers, Global Delegates, Industry Leaders, ladies and gentlemen, Namaste. Honorable Prime Minister, Sir, Vibrant Gujarat is a manifestation of your extraordinary vision to make Gujarat India's a growth engine. Today is a very special moment for me. I was born and brought up in Rajkot in the land of Saurashtra. Standing here today, the first Vibrant Gujarat Regional Conference in Rajkot, I feel a deep sense of pride and responsibility here. This event is not just for the conference. This event is a clear signal that the vision of Viksit Bharat at 2047 is now reaching regions, district, and local industrial ecosystems. I sincerely thank the Honorable Prime Minister and the Government of Gujarat for bringing this national vision to the regional level and giving a regional like a Saurashtra and Kutch direct role in India's long-term growth journey. For all of us present are here, this moment calls of ownership, commitment, and responsibility. At Jyoti CNC, our mission is very simple and very clear, propelling technology and prospering life. For us, technology is a means, but prosperity must reach people, society, and the nation. This is why manufacturing for us is not just a business. Manufacturing is our responsibility to build the future of India. The machine tool industry is a mother of industry of all manufacturing. In simple words, wherever there is a shape in the life, there is a CNC machine behind it.
From toothbrush and daily use item to a simple words, whenever is a shape in life, where is a CNC machine behind it? From the toothbrush and daily use items to automobile, mobile phones, aircraft, whatever the things are required, the CNC machines are behind that. There is always CNC machines are behind that, metal cuttings are behind that. Today, the entire world is living in a VUCA world. Volatility, uncertainty, complexity, agility. But India has shown a different path. The leadership and action of our Honorable Prime Minister have redefined the VUCA as the vision, understanding, clarity, and agility. That is why, even in today's turbulent global environment, India stands solid and stable. India will lead in manufacturing, and to do that, two things are not negotiable. The first is R&D, because leadership comes from innovation, not imitation. And second is a skill, because machines can be bought, but skills cannot. Vision must be backed by the commitment. Over the next 5 years, Jyoti CNC will invest more than 10,000 crores in manufacturing and R&D and skills, not for the scale alone, but to strengthen the India's manufacturing ecosystem. Our focus is simple: to build a capability, to create opportunity, and contribute a meaningful in the national long-term strength. In this journey, Saurashtra and Kutch together can aspire contribute to close to $1 trillion, a link with the $30 trillion of India's economy over there. This is not a prediction. This is not a slogan. This is a shared responsibility. The fact of the vibrant Gujarat is being held in the Rajkot makes a starting point of this journey. I would like to reaffirm that Jyoti CNC is fully equipped and fully committed to supported to vision Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat at 2047 by supplying precision CNC machine to Indian aerospace and defense industry, by delivering the high-speed CNC machine to electronic manufacturing systems, and by developing advanced machine for a semiconductor manufacturing ecosystem. I sincerely thank the Honorable Prime Minister, the Government of Gujarat, and all stakeholders to their leadership and supports. The journey towards the Viksit Bharat and the Atmanirbhar Bharat is not the responsibility to government alone. It is a shared responsibility of industry, institution, and society. ચાલો આપણે સૌ સાથે મળીને ક્ષમતા ઊભી કરીએ, તકો સર્જીએ અને આગેવાની લઈએ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત. થેન્ક યુ. Thank you, Mr. Parakram Singh Ji Jadeja. May I now invite Mr. Karan Adani, Managing Director, Adani Ports and SEZ Limited, to share his thoughts with us. We request the delegation to kindly stick to the time, please. Thank you. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel ji, Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat, Shri Harsh Sanghvi ji, distinguished ministers, global business leaders, friends from India and across the world, ladies and gentlemen. Honorable Prime Minister, under your leadership, India has undergone a fundamental transformation, not just in scale, but in our mindset. You have taught the nation to think long-term, to build institutions instead of announcements, and to see development not as a series of projects, but as a civilization's mission. From reforming governance and infrastructure to restoring India's global confidence, you have redefined what decisive leadership looks like in a democracy. Today,
India does not merely aspire to grow, it aspires to lead, to set standards, and to shape the future of the world. And Gujarat stands as the living proof of this philosophy, where vision is matched by execution and ambition is backed by delivery. Today, Gujarat stands among India's most industrially advanced and globally connected states, contributing to over 8% to India's GDP, accounting for 17% of industrial output, handling 40% of the nation's cargo through its ports, and leading in renewable energy. Gujarat exemplifies what integrated development truly means. This did not happen overnight. It began when you, sir, as Chief Minister, proved something, that with good governance and with speed of execution, states can really be transformed. Long before ease of doing business became part of national vocabulary, Gujarat showed what it meant in practice. Lower friction, faster decision, stronger institutions, and deep respect for enterprise. As Prime Minister, you have taken this philosophy across India. Through cooperative and competitive federalism, states have become engine of growth. Infrastructure is being built at scale, policy stability has returned, and India today stands as one of the world's most attractive destinations for investment and manufacturing. At a time when global economy faces uncertainty and fragmentation, India is emerging as a bright spot, growing close to 8%, expanding its manufacturing base, and confidently progressing towards becoming a 5 trillion economy and the world's third largest. Within this national journey, Kutch represents a very powerful symbol of transformation. Once considered remote and challenging, Kutch today has emerged as one of India's most strategic industrial, logistics, and energy hubs. For Adani Group, Mundra is our Karma Bhumi. It is not only India's largest commercial port and a fully integrated multimodal logistics gateway, but it is also home to India's largest copper smelter plant, coal to PVC complex, and solar manufacturing complex. Mundra demonstrates how long-term vision can transform not just a region, but also how industries can transform. At Khavda, we are developing the world's largest renewable energy park with 37 gigawatt of capacity. This is not just an energy project, it is India's statement to the world that economic growth, climate responsibility, and energy security can move forward together. For Adani Group, Gujarat is not just a state of investment, it is our foundation. Our chairman, Shri Gautam Adani, has always believed that the growth of our group must be inseparable from the growth of the nation. Gujarat is where our journey began, and Gujarat is where our long-term commitment remains anchored. Building on this foundation, the Adani Group commits to invest 1.5 lakh crores over the next 5 years in the region of Kutch. We will complete our Khavda project and commission the full 37 gigawatt of capacity by 2030, and we will also double our port capacity at Mundra in the next 10 years' time. Every one of these investments aligns with India's national priorities: employment generation, industrial competitiveness, sustainability, and long-term resilience. As India advances towards Viksit Bharat 2047, Gujarat will remain a cornerstone of this national transformation. The Adani Group remains deeply committed to being a trusted partner in building a strong, self-reliant, and globally respected India. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, Mr. Karan Adani. I now invite Mr. B.K. Goenka, Chairman of the Welspun Group, to share his address with us. Welcome, sir. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel,
Deputy Chief Minister Shri Harsh Sanghvi ji, other dignitaries, friends, namaskar. I am honored to be part of this August gathering today. दोस्तों, जैसे करण भाई ने बोला, हमारे लिए भी कच्छ हमारी कर्म भूमि है और वेल्सपन के लिए उसकी जन्म भूमि है. और इफ़ आई कैन से वेल्सपन माटे गुजरात घर है અને કચ્છ પિય છે. जब हम आज से 20 साल पहले कच्छ के बारे में और सौराष्ट्र के बारे में सुनते थे तो हम सुनते थे पानी की किल्लत, प्राकृतिक आपदाओं और कठिनाइयों के लिए ये पूरा रीजन जाना जाता था. और आज यही कच्छ और सौराष्ट्र दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी के बारे में, दुनिया में वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और दुनिया में सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल कंपनी के लिए और आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी जाना जाएगा. ये सब पिछले 20 सालों में ही संभव हुआ है. इसका पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के विजन और लीडरशिप को जाता है, जिन्होंने गुजरात को एक नई पहचान दी है. दोस्तों, इसके बाद मैं जब कच्छ की बात करूं और ये कहानी न सुनाऊं तो ये बात अधूरी रह जाएगी. मैं ये गर्व से बताना चाहता हूं कि 2003 में जब फर्स्ट वाइब्रेंट गुजरात हो रहा था तो मैं अपने एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए मोदी जी से मिला. तो वी वर ट्राइंग टू डू द एक्सपेंशन एट वापी फॉर आवर टेक्सटाइल प्लांट. तो ही सेड, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं गोयनका जी, आप ये प्लांट कच्छ में लगाएंगे, ये एक्सपेंशन प्लांट कच्छ में करेंगे, जहाँ 2001 में भयंकर भूकंप आया था, लाखों लोगों की मौत हो गई थी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना रोड थी, पानी थी. जैसे उन्होंने कहा और मेरे पाँव के तलों से ज़मीन निकल गई. बट उन्होंने कहा, गोयनका जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये मैं एज ए पॉलिटिशियन नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको मेरे दिल की आवाज़ से बोल रहा हूँ कि आप 1 रुपया कच्छ में लगाएंगे तो आपको $1 वापस मिलेगा. फ्रेंड, रेस्ट इज़ हिस्ट्री. लास्ट मंथ भूपेंद्र भाई ने जो वेल्सपन प्लांट का इनोवेशन किया, उसके बाद गुजरात की ये वेल्सपन फैसिलिटी दुनिया की नंबर 1 होम टेक्सटाइल कंपनी बन गई है. आज वेल्सपन गुजरात में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. आज US, UK में वेल्सपन का होम टेक्सटाइल का मार्केट शेयर मोर देन 25% है. और विंबलडन जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में भी आज वेल्सपन के प्रोडक्ट गुजरात से ही बन के जा रहे हैं. In the same way, our pipeline business, currently we are investing around 5,000 crores and we will be the largest pipe manufacturing company in the world by the end of this year. And when we talk about today, deepest, highest, longest pipeline supplied in the world, which have been made in India, made in Gujarat, made by Welspun, and it's a moment of pride for all of us. इसका दोस्तों एक बड़ा योगदान टीम गुजरात को भी जाता है. इनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था. 2024 के वाइब्रेंट गुजरात समिट में मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जितना बड़ा आपका सपना उतना बड़ा मेरा संकल्प. और आपने इस बात को सच करके दिखाया. आपने ये सपना आपने ही बहुत बड़ा कर दिया. और आज हम सबके सामने चैलेंज है कि देश को सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, हमें बल्कि देश को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन के रूप में बनाना है. एज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सेड, it is time for the new dreams, new resolutions and continuous accomplishment. Friends, the clarion call to action given by Modi ji, this is to make a future-ready growth plan for India, where we all, as an industry, can play an important role. With these words, I would like to thank you all. Jai Jai Garvi Gujarat, Jai Hind. Hello. Thank you, Mr. Goenka. I now invite Mr. Mukesh Ambani, Chairman, Reliance Industries Limited, to share his thoughts with us. Welcome, sir.
most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Chief Minister Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi ji, distinguished dignitaries, industry leaders, and dear friends, Namaskar. Let me start with Jai Somnath. The positive vibrations from our dear Prime Minister's prayers at Somnath are resonating across Gujarat and India. I congratulate our Param Adarniya Pradhan Mantri ji for the great honor bestowed upon Saurashtra and Kutch by being personally present at the Vibrant Gujarat Regional Summit. After 20 years of Vibrant Gujarat in Gandhinagar, it's a privilege to participate in the first regional Vibrant Gujarat Summit in this historic city of Rajkot. This summit will be a true force multiplier for the manifold development of Saurashtra. I salute Rajkot, truly a Raja, a king among cities of Gujarat. I salute the sacred soil of Saurashtra because my father, Mara Pujya Pitashri, Dhirubhai Ambani, સૌરાષ્ટ્રની ધરતીના પુત્ર હતા. એમનો જન્મ અહીંયા ચોરવાડમાં થયો હતો. Most respected Prime Minister, you have restored to India its civilization self-belief. Never in the history of independent India have we seen so much hope, so much self-confidence, and so much vibrancy in India as we do now. Your vision has reshaped India's trajectory for the next 50 years and more. History will record that the Modi era is when India moved from potential to performance, from aspiration to action, from being a follower to becoming a global force. Dear friends, for Reliance, Gujarat is far more than a location. Gujarat is our body, heart, and soul. We are a Gujarati company. Today, I stand before you with 5 firm commitments. First, investment at unprecedented scale. Reliance is already Gujarat's largest investor. In the last 5 years, we have invested over 3.5 lakh crores. Today, I am pleased to announce that we will double this to 7 lakh crores over the next 5 years, creating exponential employment, livelihoods, and greater sampati for every Gujarati and every Indian. Second, global leadership in clean energy and green materials. At Jamnagar, we are building the world's largest integrated clean energy ecosystem, spanning solar, battery energy storage, green hydrogen, green fertilizer, sustainable aviation fuel, and maritime fuels and advanced materials. These are not only industries of the future, they are foundations of India's prosperous tomorrow. Jamnagar, once the largest hydrocarbon energy exporter, will, in the coming years, become India's largest exporter of green energy and material from Gujarat. Third, transforming Kutch into a global clean energy hub. Our multi-gigawatt utility-scale solar project, among the world's largest, will deliver round-the-clock clean power through advanced storage and modern grid integration, powering India's green future and reinforcing Gujarat's leadership in renewables. Fourth, making Gujarat
India's artificial intelligence pioneer. In Jamnagar, we are building India's largest artificial intelligence-ready data center with a single goal: affordable AI for every Indian. Jio will launch a people-first intelligence platform built in India for India and the world, enabling every citizen, starting from Gujarat, to access AI services in their own language, on their own device, every day to make them more efficient and productive. Fifth, partnering for India's Olympic ambitions and social progress. The Reliance Foundation stands ready to serve the Prime Minister's vision of bringing 2036 Olympics to Ahmedabad. As a concrete step, Reliance will partner with the Gujarat government to manage the Veer Savarkar Multi-Sports Complex in Naranpura, a hub for hosting national and international events and training India's future champions. We are also establishing a world-class hospital in Jamnagar in Saurashtra and expanding our education facilities multifold. Development of Gujarat is our sankalp. Big in vision, bold in execution, rooted in Gujarat and dedicated to the service of Bharat Mata. Friends, today I want to make one important point. All of us know that the world is changing very fast. The geopolitical situation is creating new challenges, including some unexpected turbulence. What is reassuring for India is that these challenges cannot touch or trouble our people. This is because India has the invincible protective wall called Narendra Bhai Modi. Let the world know that this is India's defining decade. Under the Prime Minister's leadership, India is not just preparing for the future, India is shaping it. And from Saurashtra and Kutch, we in industry are very happy to participate in this growth and the direction that the Prime Minister has shown all of us. Thank you, respected Prime Minister, for your leadership. Jai Saurashtra and Kutch, Jai Jai Garvi Gujarat, Jai Hind. Thank you, Mr. Mukesh Ambani. Ladies and gentlemen, India's growth resonates across borders, building bridges of cooperation and shared prosperity around the globe. We now invite our esteemed international dignitaries. Foremost, I invite Her Excellency Ms. Jacqueline Mukengera, High Commissioner of Rwanda to India. Welcome, Madam. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Honorable Deputy Minister of Gujarat, Honorable Ministers, Honorable Senior Government officials of Gujarat, Excellencies, distinguished industry leaders, ladies and gentlemen. Good afternoon, namaste, Kemcho Gujarat. I'm delighted to be here today, and I would like to take this moment to express my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister of Gujarat for having invited Rwanda as a country partner and for giving me the opportunity to speak at this great audience in the presence of the Honorable Prime Minister of India.
May I also congratulate Honorable Chief Minister of Gujarat for organizing successfully such an amazing regional conference, like the first one, which I also attended. Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister of Gujarat, distinguished guests, Rwanda and India enjoy excellent bilateral relations. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji visited Rwanda in July 2018. It was a special visit. 6 MOUs were signed during his visit to my country, and he donated 200 cows to needy families. Thank you so much, Honorable Prime Minister of India, for your generosity and great leadership. His Excellency Paul Kagame, President of Rwanda, visited India 5 times, and I'm glad to inform you that my president attended the vibrant Gujarat Summit in 2017. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and President Paul Kagame have been very instrumental in the thriving relations between our two countries. The relations between Rwanda and India have been elevated to a strategic level thanks to our two eminent leaders. Rwanda and India have been worked together by supporting each other on various bilateral, regional, and multilateral issues of common interest. Rwanda looks forward to continued and stronger relations with India. Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister of Gujarat, distinguished guests, today Rwanda is a fast-developing, transformed, stable, and stronger nation with zero tolerance to corruption. Rwanda's economy grew by 11.8% in the third quarter of 2025. Rwanda ranks first in Africa for governance transparency. This solid governance underpins Rwanda's position as one of Africa's fastest growing economies and one of the safest countries globally. The 2024 World Bank Business Ready Report further ranks Rwanda first in Africa for ease of doing business. Rwanda is also the second highest ranking in Africa. It requires less than 6 hours to register a business in my country. Today, India is the second biggest foreign investor in Rwanda, and India is the second largest trading partner with my country. India and Rwanda relations are projected to grow higher. Rwanda has access to Africa and global markets through robust trade agreements. With these opportunities mentioned, my country is ready to welcome more Indian investors in various sectors, including manufacturing, infrastructure, agro-processing, mining, cybersecurity, tourism, health, education, and so on and so forth. These opportunities are backed by strong fiscal and non-fiscal incentives. I would like to close by inviting you all to visit Rwanda, home to the famous mountain gorillas and the big 5 animals. Please be advised that Indians with valid passports, they get 1 month free visa upon arrival.
Thank you very much for your kind attention. Dhanyavad Abahar. Thank you, Your Excellency, for your address. I now invite His Excellency, Dr. Alexander Polishchuk, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to India. We welcome you, sir. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister of the Gujarat, Shri Tripendra Patel, Deputy Chief Minister, Honorable Shri Harsh Sangwat ji, distinguished guests, distinguished Captain of the Industry. It's a great honor and pleasure for me to be back in Gujarat. It's for the third time I'm taking part in this global forum. And I would like to applaud your Honorable Prime Minister leadership, and which is the great example how from the global, from the regional leader you become the national leader, and now you are actually playing a very global role, including my country, to establish the peace. Now Gujarat is very well known around the world. And I would like to acknowledge that the presence role of the Shri Narendra Modi ji in shaping this development model and expand it to the entire country with the philosophy to create the country who will be the global leader, and to take with the next couple years on a third part, on a third stage in a global, around the economy, around the world, and as well to lead the country to your target, Viksit Bharat 2047. I would like to also applaud the Gujarat government, and thanks to the Honorable Chief Minister and his team for the cooperation. We discussing the strengthening of our cooperation in a different area. First of all, education, institutional partnership, and skills development area that can serve as a long-term foundation for the people-to-people and knowledge-based cooperation. Since 2023, Ukraine has proudly served as a partner country of this global forum, and we see this not merely as a sign of trust, but as a strategic opportunity to deepen economic cooperation between our country. And the Ukrainian companies and industries are actively engaged in a dialogue across such sectors as industry, education, agriculture, engineering, IT, energy, and logistics. Ukraine and India have a long record of successful cooperation in the traditional area, like the trade of the sunflower oil, grain, pharmaceutical products. This established trade flow demonstrates the complementary of our economies. At the same time, this exists considerable potential in precisely those sectors which Gujarat is particularly strong. The positive experience of our past cooperation, as well as the bilateral trade volume enriched in the past $4 billion USD, provides solid ground for the considering more ambitious and institutional framework for the economic engagement. First of all, I'm talking about the bilateral investment agreement and free trade agreement as a logical continuation of our long-term cooperation. Ukraine is currently awaiting response from the relevant government ministries to this initiative. Today we have the significant and the practical potential for the involvement of the Indian companies in the reconstruction and recovery of Ukraine.
This includes infrastructure, energy, housing, industrial facilities, logistics, and advanced technology solutions. In this regard, we invite our Indian friends and Indian company to participate in the next Ukraine Recovery Conference, which will be held in Poland later this year. We also see prospects for the expanded industrial and technological cooperation in the defense sector within the frame of Make in India. Ukraine and India are working toward achieving the strategic partnership. The intention to elevate bilateral relationship, the new level of reaffirmed by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky, during the historical visit of Honorable Prime Minister of India to Ukraine in 2024, a visit undertaken in the midst of the war, making him one of the very few leaders in the global south to travel to Ukraine under such circumstances. Further substantive progress along this path will be supported for forthcoming meeting of Ukraine-India Intergovernmental Commission. We are confident that the achievement of the sustainable and just peace in Ukraine will further contribute to the deepening of relationship between India and Ukraine, including with the state of Gujarat. In this regard, we hope for India continued support to international effort aimed to restore the peace, which will create a stable foundation for the long-term economic cooperation and development. I wish the Vibrant Gujarat conference very success, productive discussion, innovative ideas, and strong new partnership. Dhanyawad, Jai Hind, Jai Jai, Garvi Gujarat. Thank you very much, Your Excellency. ગુજરાતની વિકાસ યાત્રા એ દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને મક્કમ અમલીકરણનો એક ઉત્તમ સંગમ છે. હવે હું આદરપૂર્વક વિનંતી કરીશ ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને કે આપ મંચ પર પધારી આ સમગ્ર સભાને સંબોધિત કરશો. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છની વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સમાં આપણું માર્ગદર્શન કરવા પધારેલા વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટના પ્રણેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, મારા સાથી નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નિમુબેન બામણિયા, કર્ણાટકના પૂર્વ રાજ્યપાલ શ્રી વજુભાઈ વાળા, પાર્ટનર કન્ટ્રી રવાંડાના હાઈ કમિશનર મહામહિમ શ્રીમતી જેકલિન મુંગાકીરા, પાર્ટનર કન્ટ્રી યુક્રેનના એમ્બેસેડર મહામહિમ ડૉક્ટર એલેક્ઝાન્ડર પોલિશિચુક, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ચેરમેન શ્રી મુકેશભાઈ અંબાણી, વેલ્સપાન ગ્રુપના ચેરમેન શ્રી બી કે ગોયંકાજી, અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સેઝ લિમિટેડના એમડી શ્રી કરણ અદાણી, જ્યોતિ સીએનસી ઓટોમેશનના ચેરમેન અને એમડી શ્રી પરાક્રમસિંહ જાડેજા, ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વ નેતા અને લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આજે સવારે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વથી જન જન્મ આસ્થા અને આધ્યાત્મિકતાની જ્યોતને વધુ ઉજાગર બનાવી છે અને હવે ઉદ્યમશીલતાથી આત્મનિર્ભરતાને વેગ આપવા માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સનો પ્રારંભ કરવા આપણી સૌની સાથે ઉપસ્થિત થયા છે. આપણે સૌ નસીબદાર છીએ કે આપણને શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જેવા સમય કરતાં હંમેશા આગળનું વિચારનારા વિઝનરી લીડર મળ્યા છે. શ્રી મોદી સાહેબે એ વિઝન સાથે 2003માં પહેલી વાઇબ્રન્ટ સમિટ યોજીને આપણી ઉદ્યોગ સંભાવનાઓને દુનિયા સામે મૂકી.
મહાજન, પ્રજાજન અને પ્રશાસનના સહયોગથી 2003ની વાઇબ્રન્ટ સમિટને મળેલી સફળતા પછી તેમણે કહેલું કે ગુજરાત કેન એન્ડ ગુજરાતીઝ વિલ. આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં વિશ્વભરના લોકોનો ગુજરાત પરનો વિશ્વાસ, રાજ્યમાં રોકાણ માટેની સંભાવના અને બેસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટને કારણે વાઇબ્રન્ટ સમિટને ઉત્તરોત્તર જ્વલંત સફળતા મળતી ગઈ. ગુજરાતના આના પરિણામે દેશના વિકાસનું ગ્રોથ એન્જિન અને મોસ્ટ પ્રિફર્ડ ડેસ્ટિનેશન ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બન્યું છે. શ્રી મોદી સાહેબના દિશા દર્શનમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની 2 દાયકાની જ્વલંત સફળતા આજે આપણી સામે છે. પાછલા 24 વર્ષમાં રાજ્યમાં 3.57 લાખ કરોડનું એફડીઆઈ આવ્યું છે. દેશના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આઉટપુટમાં ગુજરાત 18% અને એક્સપોર્ટમાં લગભગ 30% જેટલો ફાળો આપે છે. રાજ્યમાં 2001-2માં 1.85 લાખ એમએસએમઈ હતા, જે આજે વધીને 41.9 લાખ એમએસએમઈ થયા છે. આપણા પોર્ટ્સ પરથી થતા કાર્ગો હેન્ડલિંગ 5 ગણું વધીને હવે 5,816 લાખ મેટ્રિક ટન કાર્ગો વહન થાય છે. ગુજરાત આજે ગ્લોબલ ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચર બન્યું છે. આપણે પ્રગતિના નવા બેન્ચમાર્ક પ્રસ્થાપિત કર્યા છે. જે સેક્ટરમાં ગુજરાતની પ્રેઝન્સ નહીવત હતી, તેમાં આપણું રાજ્ય નોવેરમાંથી એવરીવેર બન્યું છે. ઓટો સેક્ટર, સેમિકન્ડક્ટર, ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ગ્રીન એનર્જી જેવા અનેક ઇમર્જિંગ સેક્ટરમાં ગુજરાત હબ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આપણે શ્રી મોદી સાહેબની પ્રેરણાથી 2024માં જે વાઇબ્રન્ટ સમિટનું આયોજન કર્યું, તેમાં આ સેક્ટર સહિતના અન્ય સેક્ટર્સમાં રોકાણ માટે 98,000 જેટલા એમઓયુ થયા હતા. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આ એમઓયુમાંથી 25,500 તો એકલા સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ માટેના હતા અને એમાંથી 78% પ્રોજેક્ટો કમિશન પણ થઈ ગયા છે. આપણા દરેક જિલ્લા અને રિજિયનની પોતાની આગવી ઓળખ, વારસો અને વિશિષ્ટ સ્ટ્રેન્થ છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ટિયર 2, ટિયર 3 શહેરો તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારો પણ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજિયનલ કોન્ફરન્સથી આ ગ્રોથ જર્નીમાં જોડાય એવો વિચાર આપણને આપ્યો છે. આજે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છની VGRC વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં શરૂ થાય છે. આ પ્રદેશના 12 જિલ્લાઓ રિન્યુએબલ એનર્જી, વર્લ્ડ ક્લાસ પોર્ટ્સ, શિપ બિલ્ડિંગ, એગ્રો પ્રોસેસિંગ, સિરામિક, કેમિકલ, ફિશરીઝ અને બ્લુ ઇકોનોમી સહિતના ક્ષેત્રોમાં રોકાણ માટેની સુદૃઢ ઇકોસિસ્ટમ ધરાવે છે. રાજ્ય સરકાર પણ કોસ્ટલ હાઈવે, ઇકોનોમિક કોરિડોર, 4 લેન તથા 6 લેનના ઝડપથી અપગ્રેડેશન તેમજ કચ્છ સૌરાષ્ટ્રમાં આધુનિક એરપોર્ટ સાથે સીમલેસ કનેક્ટિવિટી સંગીન કરી રહી છે. શ્રી મોદી સાહેબે દેશમાં સંતુલિત પ્રાદેશિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટનો અભિગમ અપનાવ્યો છે. આપણા જિલ્લાઓ પણ વિવિધ પ્રોડક્ટના મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનીને વોકલ ફોર લોકલ અને લોકલ ફોર ગ્લોબલ સાકાર કરે તે માટે રાજ્ય સરકારે સ્ટેટ જીડીપીની જેમ જ દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટના જીડીપીમાં વૃદ્ધિનો કોન્સેપ્ટ ડેવલપ કર્યો છે. જિલ્લાઓના વિકાસની ગતિને નવી દિશા આપવા આપણને વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં 6 રિજિયનલ ગ્રોથ હબ વિકસાવવાના છીએ. આ રિજિયનલ ગ્રોથ હબ હવે વાઇબ્રન્ટ સમિટથી આત્મનિર્ભર વિકસિત ભારતનો વડાપ્રધાનશ્રીનો સંકલ્પ પાર પાડવામાં ગુજરાત અગ્રેસર રહેશે. વાઇબ્રન્ટ સમિટ હવે વિશ્વાસ, વિશ્વસનીયતા અને વિકાસની બ્રાન્ડ બની છે. આ વિજયામાં ઉપસ્થિત દેશ વિદેશના આપ સૌ રોકાણકારોને આ બ્રાન્ડના પાર્ટનર બનવાનું આમંત્રણ પાઠવીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના ગરિમાપૂર્ણ સંબોધન બદલ અમે પણ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર मानिए છીએ. देवियों और सज्जनों, हम अब उस महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जो कच्छ और सौराष्ट्र सहित संपूर्ण गुजरात के औद्योगिक भविष्य को एक नई और सुदृढ़ दिशा प्रदान करेगा. इस क्षेत्र के कुल 7 जिलों में 3,540 एकड़ क्षेत्र में फैली 13 नई स्मार्ट औद्योगिक एस्टेट्स के विकास की परिकल्पना की गई है.
इसके साथ ही गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा नागलपर में 336 एकड़ क्षेत्र में सेक्टर स्पेसिफिक मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्रियल पार्क का विकास किया गया है। ये पहल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त करती है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर नवीन स्मार्ट जीआईडीसी एस्टेट्स एवं नागलपर मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शुभारंभ करने की कृपा करें। इन सभी जिले अमरेली, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मोरबी, राजकोट, सुरेंद्रनगर में उत्कृष्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की परिकल्पना की आज उद्घोषणा की गई है। बहुत बहुत अभिनंदन है। ये घोषणा गुजरात की विकास यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो राज्य को वैश्विक विनिर्माण एवं नवाचार के अग्रणी केंद्र के रूप में और सशक्त बनाएगी। आइए एक बार फिर अभिनंदन करते हैं इस परिकल्पना को साकार करने के लिए। कच्छ की श्वेत मरुभूमि का औद्योगिक साहस और सौराष्ट्र की उद्यमी शक्ति, इन दोनों के संगम ने गुजरात को विश्व के मानचित्र पर एक नई परिभाषा दी है। आपदा को अवसर में बदलने की यह यात्रा केवल विकास की नहीं बल्कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति की कहानी है। आइए कच्छ और सौराष्ट्र के इसी अद्भुत कायाकल्प और वैश्विक उत्थान को जाने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से। ગુજરાત અને દેશનું સપનું છે 2047 જ્યારે આઝાદીના 100 વર્ષ થાય ત્યારે આ દેશ વિકસિત દેશ હોવો જોઈએ। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીને અમારા સૌરાષ્ટ્ર કચ્છનો વાયદો છે કે ભારત વિકસિત બનીને રહેશે અને એમાં અમારી ભાગીદારી રહેશે, કારણ કે અમારા ઉદ્યોગો હવે છલાંગો સિવાય વાત નથી કરતા। અમારી ઉદ્યમિતા હવે આકાશને પણ લિમિટ નથી માનતી। એગ્રો પ્રોસેસિંગ, ફૂડ એન્ડ બેવરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હવે અમારી સભ્યતા બની ગઈ છે। વુડ પ્રોડક્ટ્સ અને નોન મેટાલિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હવે અમારી છબી થઈ ગઈ છે। રાજ્યનું 89% માઇનિંગ અમારે ત્યાં થાય છે અને રાજ્યના 87% પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ અમે બનાવીએ છીએ। દુનિયાની સૌથી મોટી તેલ રિફાઇનરી અમારા આંગણે જામનગરમાં ઊભી છે। વિશ્વનો સૌથી મોટો શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ અમારા અલંગમાં ઊભો છે। કચ્છ આજે સ્ટીલ અને પાઇપ મેન્યુફેક્ચરિંગનું હબ બન્યું છે, જ્યાં દેશની અગ્રણી કંપનીઓ દ્વારા મોટા પાયે રોકાણ અને રોજગારીનું સર્જન થઈ રહ્યું છે। દુનિયાનો સૌથી મોટો હાઇબ્રિડ રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક કચ્છના ખાવડાની શાન છે। મુન્દ્રા, કંડલા અને પીપા વાવના બંદરો દેશની નિકાસમાં મોટું યોગદાન આપી રહ્યા છે। વિશ્વની સૌથી મોટી ટોવલ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી પણ આ વિસ્તારમાં જ ધમધમે છે। તમે વિશ્વના કોઈ પણ દેશમાં જાઓ ત્યાં મોરબીની ટાઇલ્સ અચૂક જોવા મળશે, કેમ કે અમારા મોરબીનું સિરામિક ક્લસ્ટર આખા વિશ્વમાં અગ્રેસર છે। અમારા રાજકોટમાં બનેલા ઓટો પાર્ટ્સ આજે દુનિયાભરની ગાડીઓમાં દોડે છે અને અહીંનું એન્જિનિયરિંગ હવે એરોસ્પેસ અને ડિફેન્સ ક્ષેત્રે પણ મહત્વનું યોગદાન આપી રહ્યું છે। આ તો હજી શરૂઆત માત્ર જ છે। હવે તો ગ્રીન હાઇડ્રોજન હબ, જખૌનું ફિશિંગ ક્લસ્ટર અને ભચાઉનો મિનરલ ઝોન કચ્છની કાયાપલટ કરવા જઈ રહ્યો છે। બોટાદમાં ઇકો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક, રાજકોટમાં મેડિકલ ડિવાઇસ પાર્ક અને નોલેજ ક્લસ્ટર સાથે સૌરાષ્ટ્ર હવે વિકાસની તેજ ગતિ પકડવા જઈ રહ્યું છે। અમે ઔદ્યોગિક વિકાસની સાથે પર્યાવરણનું પણ જતન કર્યું છે, એટલે જ તો ગીરના સિંહોની સંખ્યામાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે। ફ્યુચરિસ્ટિક ઉદ્યોગોની સાથે સાથે અમારા મૂળિયા નથી ભૂલ્યા અમે। દ્વારકાધીશ અને દાદા સોમનાથની પ્રેરણાથી
આપણી કલા અને સંસ્કૃતિ આજે સદાય જીવંત છે. રાજકોટના પટોળા, જામનગરી બાંધણી, કચ્છની અજરખ અને સુરેન્દ્રનગરના ટાંગલિયા વણાટ આજે વિશ્વના બજારોમાં ધમધમે છે. વિકસિત ભારત અને વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત થકી આપણે સૌથી વધારે લીડ કોઈ લે વિકસિત ભારતમાં તો એ ગુજરાત લે, અને ગુજરાત હર હંમેશ દેશનું ગ્રોથ એન્જિન રહ્યું છે, રહેશે. એનું કારણ કે આપ સૌ સાથે મળી અને આપણે આગળ વધીશું. આવો નવા વિચારો અને નવી સંભાવનાઓને આવકારીએ. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની આ ભૂમિ હવે સજ્જ છે. કોસ્ટલ અને નોન કોસ્ટલ વિસ્તારો માટે તૈયાર છે આપણો ફ્યુચરિસ્ટિક ઇકોનોમિક માસ્ટર પ્લાન. તો ચાલો આપણા પોર્ટ લેડ ડેવલપમેન્ટ, લોજિસ્ટિક્સ, બેટર કનેક્ટિવિટી, બ્લુ ઇકોનોમીથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની સમૃદ્ધિનો સંકલ્પ કરીએ. 2047 સુધીમાં વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરીએ. વેલકમ ટુ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સ. Regional aspirations, global ambitions. अभी हमने जो दृश्य देखे वे केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक आधुनिक भगीरथ प्रयास के प्रमाण है. एक समय था जब कच्छ की रेत और सौराष्ट्र की लहरें केवल चुनौतियों की कहानी सुनाती थी, पर तभी एक संकल्प का उदय हुआ. एक ऐसा नेतृत्व सामने आया जिसने रेगिस्तान की खामोशी में भी विकास की गूंज पैदा कर दी. यह यात्रा है अभाव से प्रभाव तक की. यह गाथा है कठिनाइयों को क्रांति में बदलने की. और इस परिवर्तन के सूत्रधार वही है जिन्होंने गुजरात के मॉडल से पूरे राष्ट्र को आत्मनिर्भरता का स्वप्न देखना सिखाया. आज जब कच्छ और सौराष्ट्र के उद्योग वैश्विक व्यापार की धुरी बन रहे हैं, तो यह उस विजन की जीत है जिसने हमेशा नेशन फर्स्ट को सर्वोपरि रखा. अत्यंत गरिमा, असीम आदर और देश के 140 करोड़ सपनों के विश्वास के साथ मैं सादर मंच पर आमंत्रित करती हूं आधुनिक भारत के शिल्पकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को. आइए ऊर्जावान करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें उनके संबोधन के लिए. કેમ છો? गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, एक्सेलेंसीज, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 2026 के आरंभ के बाद ये मेरा गुजरात का पहला दौरा है. और सुखद इसलिए भी है क्योंकि 2026 की मेरी यात्रा सोमनाथ दादा के चरणों में सर झुका करके हुई है. और अब मैं राजकोट में इस शानदार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूं. यानी विकास भी विरासत भी, यह मंत्र हर तरफ गूंज रहा है. मैं देश और दुनिया भर से यहां पधारे आप सभी साथियों का वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट में स्वागत करता हूं.
अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट का मंच सजता है तो मुझे सिर्फ एक समिट नहीं दिखती, मुझे 21वीं सदी के आधुनिक भारत की वो यात्रा नजर आती है जो एक सपने से शुरू हुई और आज एक अटूट भरोसे तक पहुंच चुकी है। 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात की ये यात्रा एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गई है। अभी तक इसके 10 एडिशन हो चुके हैं और हर एडिशन के साथ इस समिट की पहचान और भूमिका दोनों मजबूत होती रही है। साथियों, मैं वाइब्रेंट गुजरात समिट के विजन के साथ पहले दिन से जुड़ा रहा हूं। शुरुआती दौर में हमारा मकसद था कि गुजरात के सामर्थ्य से दुनिया परिचित हो, लोग यहां आए और यहां निवेश करें और इससे भारत को फायदा हो, दुनिया भर के निवेशकों को भी फायदा हो। लेकिन आज ये समिट इन्वेस्टमेंट से भी आगे बढ़कर ग्लोबल ग्रोथ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पार्टनरशिप का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन गई है। बीते सालों में ग्लोबल पार्टनर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई है और समय के साथ ये समिट इंक्लूजन का भी बहुत बड़ा उदाहरण बन गई है। यहां कॉरपोरेट ग्रुप के साथ साथ कोऑपरेटिव्स, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, मल्टीलेटरल और बायलेटरल संगठन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सभी एक साथ संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। गुजरात के विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात समिट ने लगातार कुछ नया, कुछ विशेष किया है। वाइब्रेंट गुजरात की ये रीजनल समिट भी इसका एक उदाहरण बन गई है। इसका फोकस गुजरात के अलग अलग हिस्सों के अनटैप पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने का है। जैसे किसी क्षेत्र में कोस्टलाइन का सामर्थ्य है तो कहीं एक लंबी ट्राइबल बेल्ट है, कहीं इंडस्ट्रियल क्लस्टर का एक बड़ा इकोसिस्टम है, तो कहीं खेती और पशुपालन की समृद्ध परंपरा है। यानी गुजरात के अलग अलग रीजन्स की अपनी ताकत है। वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल समिट गुजरात की इन्हीं रीजनल संभावनाओं पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है और इसमें गुजरात की आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये साफ है
कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। इन्फ्लेशन काबू में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है। जेनरिक मेडिसिन प्रोडक्शन में मामले में भारत नंबर 1 है। दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है वो देश का नाम भारत है। साथियों, भारत की ग्रोथ से जुड़ी फैक्ट रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्र की उस मंत्र की सक्सेस स्टोरी है। बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है। हमारा यूपीआई दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बना है। कभी हम 10 में से 9 मोबाइल बाहर से मंगाते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सोलर पावर जनरेशन के मामले में भी टॉप 3 देशों में से भारत एक है। हम तीसरे बड़े एविएशन मार्केट है और मेट्रो के मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। साथियों, आज हर ग्लोबल एक्सपर्ट, ग्लोबल संस्थाएं भारत को लेकर बुलिश है। आईएमएफ भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताता है। एसएनपी 18 इयर्स के बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड करती है। फिच रेटिंग भारत की मैक्रो स्टेबिलिटी और फिस्कल क्रेडिबिलिटी इसकी प्रशंसा करती है। भारत पर दुनिया का ये भरोसा इसलिए है क्योंकि ग्रेट ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भारत में हम एक अभूतपूर्व सर्टेनिटी का दौर देख रहे हैं। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में कंटिन्यूटी है। भारत में न्यू मिडिल क्लास का दायरा बढ़ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है और इन फैक्टर्स ने भारत को असीम संभावनाओं का देश बना दिया है। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। देश और दुनिया के हर निवेशक के पास इन संभावनाओं का लाभ उठाने का यही समय है, सही समय है। और वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट भी आप सभी इन्वेस्टर्स को यही संदेश दे रही है। सौराष्ट्र कच्छ में निवेश का यही समय है, सही समय है। साथियों, आप सभी जानते हैं, सौराष्ट्र और कच्छ ये गुजरात के वो क्षेत्र हैं जो हमें सिखाते हैं कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अगर ईमानदारी से, मेहनत से डटे रहा जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ये वही कच्छ है जिसने इस सदी की शुरुआत में भीषण भूकंप झेला था।
ये वही सौराष्ट्र है जहां वर्षों तक सूखा पड़ता था। पीने के पानी के लिए माताओं बहनों को कई कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था। बिजली का कोई ठिकाना नहीं था। हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें थी। साथियों, आज जो 20-25 साल के नौजवान हैं, उन्होंने उस दौर की सिर्फ कहानियां सुनी हैं। सच्चाई ये थी कि लोग कच्छ में, सौराष्ट्र में लंबे वक्त तक रहने के लिए तैयार नहीं होते थे। उस कालखंड में लगता था कि स्थितियां कभी भी नहीं बदलेगी, लेकिन इतिहास साक्षी है, समय बदलता है और जरूर बदलता है। सौराष्ट्र कच्छ के लोगों ने अपने परिश्रम से अपना भाग्य बदल दिया है। साथियों, आज सौराष्ट्र और कच्छ सिर्फ अवसरों का ही क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र भारत की ग्रोथ का एंकर रीजन बन चुका है। ये रीजन आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने वाला बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सौराष्ट्र और कच्छ की बहुत बड़ी भूमिका है, और ये भूमिका मार्केट ड्रिवन है, और यही बात इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा भरोसा बनती है। यही राजकोट में ही 2.5 लाख से अधिक एमएसएमईज हैं। यहां अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में स्क्रू ड्राइवर से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, लग्जरी कार के लाइनर्स, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन और रॉकेट तक के पार्ट्स ये हमारे राजकोट में बनते हैं। यानी यह रीजन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हाई प्रिसिशन, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन को सपोर्ट करता है। और यहां का ज्वेलरी उद्योग तो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। यह सेक्टर स्केल, स्किल और ग्लोबल लिंकेज तीनों का उदाहरण है। साथियों, अलंग दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। दुनिया के 1/3 शिप्स यहीं पर रिसाइकल होते हैं। यह सर्कुलर इकोनॉमी में भारत की लीडरशिप का भी प्रमाण है। भारत टाइल्स के बड़े प्रोड्यूसर में से एक है। इसमें भी मोरबी जिले का योगदान बहुत बड़ा है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी हैं और ये ग्लोबली बेंचमार्क भी है। और मुझे याद है, सौराष्ट्र के अखबार के लोग यहाँ मौजूद होंगे और मेरे बाल नोच लेते थे। एक बार मैंने यहाँ सौराष्ट्र में भाषण में कहा था, मैं એમ કહેલું કે હું જોઈ શકું છું કે એક સમય એવો આવશે કે મોરબી, જામનગર અને રાજકોટ આ ત્રિકોણ મિની જાપાન બનશે। ત્યારે મારી બહુ મજાક ઉડાયેલી। આજે હું મારી આંખો સામે હકીકત જોઈ રહ્યો છું। हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली
सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है। साथियों, सौराष्ट्र और कच्छ भारत की ग्रीन ग्रोथ का, ग्रीन मोबिलिटी का और एनर्जी सिक्योरिटी का भी एक बड़ा हब बन रहा है। कच्छ में 30 गीगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पार्क होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, यह पार्क पेरिस सिटी से भी 5 गुना बड़ा है। यानी इस क्षेत्र में क्लीन एनर्जी एक कमिटमेंट के साथ साथ कॉमर्शियल स्केल रियलिटी भी है। आप सभी ग्रीन हाइड्रोजन के पोटेंशियल से परिचित हैं। भारत में इस दिशा में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम चल रहा है। यहां कच्छ और जामनगर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बड़े केंद्र बन रहे हैं। कच्छ में एक विशाल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS भी स्थापित किया जा रहा है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ग्रिड स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी भी एंश्योर की जा रही है। साथियों, कच्छ और सौराष्ट्र का एक और बहुत बड़ा सामर्थ्य है, यह रीजन भारत के वर्ल्ड क्लास पोर्ट से लेस है। भारत के एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। पीपावाव और मुंद्रा जैसे पोर्ट्स भारत के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के मेजर हब बन चुके हैं। पिछले वर्ष गुजरात के पोर्ट से करीब 2.25 लाख व्हीकल्स एक्सपोर्ट हुए हैं। लॉजिस्टिक्स ही नहीं, यहां पोर्ट लेड डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट की अनंत संभावनाएं हैं। इसके साथ ही गुजरात सरकार फिशरीज सेक्टर को भी विशेष प्राथमिकता दे रही है। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहां बड़े पैमाने पर काम हुआ है। सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े इन्वेस्टर्स के लिए यहां स्ट्रांग इकोसिस्टम तैयार है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स आज सबसे बड़ी आवश्यकता है और गुजरात इस मोर्चे पर इन्वेस्टर्स को पूरी सर्टेनिटी देता है। यहाँ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का इंटरनेशनल इकोसिस्टम मौजूद है। गुजरात सरकार की कौशल स्किल यूनिवर्सिटी फ्यूचर रेडी स्किल में युवाओं को तैयार कर रही है। ये ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भारत की पहली नेशनल लेवल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। गतिशक्ति यूनिवर्सिटी रोड, रेलवे, एयरवे, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर के लिए स्किल्ड मैन पावर तैयार कर रही है। यानी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहां टैलेंट पाइपलाइन भी एश्योर्ड है। आज ढेर सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज भारत में नए नए अवसर देख रही हैं और गुजरात उनके लिए प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। गुजरात में ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख यूनिवर्सिटीज अपने कैंपस शुरू कर चुकी है। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने वाली।
साथियों, गुजरात में नेचर भी है, एडवेंचर भी है, कल्चर भी है और हेरिटेज तो है ही है। यानी टूरिज्म का जो अनुभव चाहिए वो यहां मिलेगा। लोथल भारत की 4,500 साल पुरानी समुद्री विरासत का प्रतीक है। यहां दुनिया का सबसे प्राचीन मानव निर्मित डॉकयार्ड मिला है। यहां नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। कच्छ में आजकल रण उत्सव का आयोजन भी हो रहा है। यहां की टेंट सिटी में रुकना एक अलग अनुभव होता है। साथियों, जो जंगलों का, वाइल्ड लाइफ का शौकीन है, उसके लिए गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन के दर्शन से बेहतर भला क्या अनुभव हो सकता है। यहां हर वर्ष 9 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। जिसे समंदर का साथ अच्छा लगता है, उनके लिए शिवराजपुर बीच है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है। इसके अलावा मांडवी, सोमनाथ, द्वारका में भी बीच टूरिज्म के लिए अनेक संभावना है। यहां पासी में दीव भी है। दीव भी वाटर स्पोर्ट्स का, बीच गेम्स का बेहतरीन डेस्टिनेशन बन रहा है। यानी आप इन्वेस्टर्स के लिए सामर्थ्य से, संभावनाओं से भरा ये पूरा क्षेत्र है। आप जरूर इसका पूरा लाभ उठाइए। और मैं बहुत पहले से कहता आया हूं, अगर आप देरी करें तो मुझे दोष मत देना। सौराष्ट्र कच्छ में आपका हर निवेश गुजरात के विकास को गति देगा, देश के विकास को गति देगा। और सौराष्ट्र की ताकत, अभी रवांडा के हाई कमिश्नर बता रहे थे कि मैं जब रवांडा गया तो मैंने 200 गाय वहां गिफ्ट की थी। ये 200 गाय हमारी गिर गाय थी। लेकिन उसकी एक विशेषता है, जब हमने 200 गाय दी वहां की ग्रामीण इकोनॉमी के लिए, तो उसमें एक नियम है कि गाय तो आपको देंगे, लेकिन उसकी जो पहली बछड़ी होगी वो आपको वापस देनी होगी, और वो हम दूसरे परिवार को देते हैं। यानी इन दिनों वो 200 गाय से शुरू हुआ, हजारों परिवारों के पास गाय पहुंच चुकी है। रवांडा की ग्रामीण इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत दे रही है और हर घर में गिर गाय नजर आ रही है। ये है मेरा सौराष्ट्र। साथियों, आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को बहुत फायदा हो रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत ने बहुत बड़ा रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर में किया गया है। भारत ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। इससे देशवासियों को 100% बीमा कवरेज देने के अभियान को गति मिलेगी। इसी तरह करीब 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया है। इससे करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। भारत ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स को भी लागू कर दिया है। इससे वेजेज, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्री तीनों को एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क मिला है। यानी श्रमिक हो या फिर इंडस्ट्री, सभी का इससे फायदा है। साथियों, आज भारत डेटा आधारित इनोवेशन का, एआई रिसर्च का, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। यानी भारत की पावर डिमांड लगातार बढ़ रही है। भारत को एश्योर्ड एनर्जी की बहुत जरूरत है और इसका बहुत बड़ा माध्यम न्यूक्लियर पावर है। इसको देखते हुए
हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया है। भारत ने पिछले संसद के सत्र में शांति एक्ट के जरिए सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ओपन कर दिया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, यहां उपस्थित सभी निवेशकों को मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस अब रुकने वाली नहीं है। भारत की रिफॉर्म जर्नी इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ चुकी है। साथियों, आप सभी यहां सिर्फ एमओयू के साथ नहीं आए हैं, आप यहां सौराष्ट्र कच्छ के विकास और विरासत से जुड़ने आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इन्वेस्टमेंट की पाई पाई यहां शानदार रिटर्न दे करके जाएगी। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं गुजरात सरकार को, गुजरात की टीम को भी उनके इस प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2027 में शायद उनका वाइब्रेंट समिट होगा, उसके पहले ये रीजनल समिट एक अच्छा प्रयोग हो रहा है। और मुझे खुशी हो रही है कि जिस काम को शुरू करते समय मुझे काम करने का अवसर मिला था, आज जब मेरे साथियों के द्वारा उस तक का विस्तार हो रहा है, उसको नई ऊर्जा मिल रही है, तो आनंद अनेक गुना बढ़ जाता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके ओजस्वी और ऊर्जावान संबोधन के लिए आपका हृदय से आभार। आपके शब्दों ने कच्छ और सौराष्ट्र के साथ पूरे राष्ट्र को एक नई दृष्टि और अटूट विश्वास दिया है। विकसित भारत के आपके संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your unwavering leadership and for inspiring a billion dreams. As our Honorable Prime Minister, sir, departs, let the applause resonate. गुजरात के राजकोट से वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का सीधा